Good evening to all of you. Is this audible? Visible everyone? All clear? All clear? Join करिगले समस्ते? Everyone joined? Join करिगले? Shall we start? Start करियो? Okay. चलो आज डिस्कशन मु केतरा केस स्टडीज रो स्टार्ट करूची फर्स्ट पानामा पेपर स्कैंडल यार ना सुनी चंदी पानामा पेपर स्कैंडल ये इट exposed widespread tax evasion and money laundering through offshore accounts सत्यम स्कैम यार सुनियन सत्यम स्कैम कॉर्पोरेट फ्रॉड मु कहि सत्यम स्कैम रे कोन होतला एनरॉन स्कैंडल अगेन कॉर्पोरेट फ्रॉड I will give you another example. Pranam, Mitanjali. नमस्कार. Join कले समस्ते. Everyone joined. भल्ला अछंती. Internal security जहाँ जहाँ चाली ची क्लास बुझिले समस्ते लास्ट क्लास रे जहाँ पढ़ितिले. समस्ते join कले. हमको चिन्हचंदी. Who is the person who is on the screen? Have you heard about this name? Yes. समस्ते join कले ना अन्य माने join करूछंती. I think others are joining. Shweta, good evening. Devashish, Licha, Mami, Maurya, everyone joined. बहुत बढ़िया. Just wait for 1-2 minutes, 1 or 2 minutes more for others to respond. Then we will start. Start करिवा तापरे. मते कहंदो मेंस में प्रिपरेशन केमती चलछि. मेंस में प्रिपरेशन भलो चलछि समस्तकर. सरी चैनल सब हाँ सब क्लास होछि. मेंस पई almost all the subjects तार क्लास होछि. पढ़ा अन्य प्रिपरेशन भलो चलछि समस्तकर. प्रिपरेशन भलो चलछि.
ମୁଁ ऑलरेडी कहितली एटा प्री कम मेंस अप्रोच रो पाठ पढा फर्स्ट प्रीलिम्स पई पढिबे तापर मेंस पई पढिबे सॉरी फर्स्ट मेंस पई पढिबे तापर प्रीलिम्स पई पढिबे आई एक्सपेक्ट समस्त सही हिसाब रे पढुचंदी हो कि नहीं नाउ किछि जदि खार किछि सीक्रेट स्ट्रेटजी अछि यू कैन शेयर बा टॉपर माने जहा कहउचंदी ताको मध्ये सुनिथियो म बाबू समस्त नहीं टॉपर माने कोन कहउचंदी टॉपर मानकर स्ट्रेटजी कोन हो कि नहीं डू नीड इन टॉपर इंटरेक्शन टॉपर मानक सहित के इंटरेक्ट करिया को चाहउचंदी जो माने क्वालिफाई करछंदी तांको डाकिबा यू विल टॉक टू देम इफ यू हैव एनी डाउट देन यू कैन रेज योर क्वेश्चंस पचारि परिबे दरकार ए भलिया किछि सेशन ए भलिया सेशन किछि दरकार ठीक अछि सुश्री प्रणाम ठीक अछि हम आसबे नो आई थिंक ऑलमोस्ट एवरीवन जॉइन्ड नाउ समस्त प्राय तो जॉइन करि गलेनी almost everyone joined. Now I will give you one example. Let's start from one example. Vijay Mallya case. Vijay Mallya ki kahar CEO of Kingfisher Airlines. It was started in 2005 and it was grounded in 2012. There was a lot of debt burden on it. Samaste janithibe. And airlines is also being investigated for suspected diversion of funds and financial irregularities. पाखापाखि 10,000 कोटी टंका पाखापाखि 10,000 कोटी टंका काम देवाशीष क्लास मो क्लास जो सब्जेक्ट मु पढ़ाऊँ से सब्जेक्ट रे मो क्लास नोट्स व्यतीत द्वितीय मटेरियल द्वितीय सोर्स कहीं किछि फॉलो करिवार आवश्यकता नहीं और दिस इज अ वेरी क्लियर स्टेटमेंट फ्रॉम माय साइड जो सब्जेक्ट मु पढ़ेबी जीएस 1 रे आपन को पढ़ेबी सोसाइटी जीएस 2 रे सोशल जस्टिस जीएस 3 रे इकोनॉमिक्स सोशल डेवलपमेंट एंड इंटरनल सिक्योरिटी एंड फुल एंटायर जीएस 4 एथिक्स इंटीग्रिटी एप्टीट्यूड ये जहा जहा मु पढ़ेबी आ सहित एसे पेपर भी पढ़ेबी न एठी एक्स्ट्रा कहा को किछि भी पढ़िबार नै जेति कि पढ़ई दैट इज मोर देन सफिशिएंट हैला Vijay Mallya was in dynamic cooperation under section 3 of Avoidance of Tax Evasion Act 2002 3 to 7 years determined with 5 lakh fine and now he is under the care of UK court. CBI is attempting to get the guardianship of Vijay Mallya under removal settlement. DRT Debt Recovery Tribunal requested in January 2017 together and severally responsible for 6,203 crore with 11.5% premium. Now, ये जो example मु देखैली Vijay Mallya case कोटे then second is Panama Papers scandal यार नाम सुनिथिबे. It was exposed in April 2016. Largest data leak in the history. ये जो world र जत्ते elite माने जत्ते बड़ बड़ politician businessman ब्यूरोक्राट सेलिब्रिटी से माने ऑफशोर टैक्स हेवन रे तांगर मनी हाइड करथले ऑफशोर टैक्स हेवन कोन इकोनॉमिक्स रे डिस्कस करछ ऑफशोर टैक्स हेवन रे तांगर मनी हाइड करथले टू इवेड टैक्सेस जाको हमें बा मेनी टाइम्स व्हिच इज नोन एज लॉन्डर्ड मनी leak included over 11.5 million confidential documents from Panamanian law firm Mossack Fonseca ये गोटे लॉ फर्म रु सब ऑफिशियल रिकॉर्ड डाटा बाहरी गला बुझिला
ये कहला कि 2,14,000 सेल कंपनीज लिंक टू इंडिविजुअल्स. सेल कंपनी they don't exist actually, but they exist only in pen and paper. They exist only in pen and paper. ହେଲା बुझेला. तो ये आउट एग्जांपल कहली पानामा पेपर्स रो एग्जांपल, विजय माल्या एग्जांपल. देन कहली आउट सत्यम स्कैम, कॉर्पोरेट फ्रॉड. इन्वेस्टर मानक सत्यम रे कोन हला, सत्यम रे इन्वेस्टर मानक मिछरे देखा गला कि एते टंका कंपनी प्रॉफिट करछि. देन इन्वेस्टर स्टार्टेड इन्वेस्टिंग मोर मनी एवं से मनी टाको साने मिसयूज कले. कोन कले मनी टाको साने मिसयूज कले. इन द सेम वे देयर इज अनदर स्कैंडल नोन एज एनरॉन स्कैंडल. It is a corporate fraud. It leads to one of the largest bankruptcy in the USA history. Then what are the key findings? I mean, देखिले Panama Papers रो key findings कौन? There is use of offshore tax havens. Offshore tax haven, these are basically no tax or low tax country. These are basically no tax or low tax country. Wealthy individuals and corporations use shell companies to conceal assets, avoid taxes, in some cases evade sanctions. Second, involvement of high profile figures. Here 12 current and former world leaders including Prime Minister of Iceland, Pakistani Prime Minister Nawaz Sharif, close associates of Russian President Vladimir Putin, so they are involved. देखो तो कितने high profile लोग they are involved here. Which person है कितने high profile लोग involved in Panama scam. Global political repercussion. इटी कौन है Iceland Prime Minister resigned after protest. Iceland protest है कि how the Prime Minister can be involved such immoral activity. So Prime Minister has to resign. Legal and ethical debate. Legal tax avoidance and illegal evasion. What is the difference between tax avoidance and tax evasion? Tax avoidance means you are using some exemption methodology, government methodology, exemption methodology को use करते हैं. That is tax avoidance and illegal tax evasion. The global offshore financial industry, which facilitates such as arrangements, it was criticized for its role in enabling corruption. Financial institution मानक को criticize करा गला कि they involved in corruption. Then Satyam scam, कहली already largest corporate fraud in India. January 2009 it came to light. It involved manipulation of financial statements by Hyderabad based IT company Satyam Computer Services Limited. ये कौन कला? Now it puts a question on corporate governance. And it has significant impact on credibility of Indian business globally. यार कहाँ पर impact पड़ला? It has huge significance on Indian business. So it हेतिला कौन सत्यम रो founder chairman Ramalinga Raju, he admitted inflating the company's profit. मिच्छरे देखेले inflated profit. धर 100 टका profit 1000 टका देखेबो कि profit होची. So automatically it falsified accounts by overstating cash reserve. ये देखेले कि 5000 कोटी रो cash reserve अछि. Inflating profits to show consistent growth. So this scam it uncovered when Raju confessed in a letter to the board admitting he falsified financial records to attract investors and sustain stock prices. So first से कौन देखेले एटी देखेले inflated revenue कि कंपनी बहुत अधिक प्रॉफिट करूची. कौन देखेले inflated revenue कंपनी बहुत अधिक प्रॉफिट करूची. Overstated profit, fabricated cash balance. Fabricated cash balance, non-existent cash and bank balance. Higher profit margin, Mishra dekhele. These are the key deceptions. Mishra dekhele. Discovery of the fraud, how it was discovered. ये जेतेबेले when Raju attempted to acquire two real estate company, ओडेला Midas Infra and Midas Properties, सत्यम फंड को यूज करिकी सत्यम रो जो फंड आनिले से प्रथमे कोन कले ना कंपनी जति प्रॉफिट करछि ताटो अधिक प्रॉफिट देखे देबो लोक तो लोक इन्वेस्ट कले दैट यू विल यूज दैट इन्वेस्टर्स मनी टू एक्वायर समथिंग एल्स सेही टंकाटा को यूज करिक से आउ अलगा प्रॉपर्टी एक्वायर कर कोन कले सेही टंकाटा को यूज करिक से अलगा प्रॉपर्टी एक्वायर कर बुझिला. सो एक्वायर करिवा कारण देयर इज क्वेश्चन आसिला कि मे बी करप्शन हेइ ताई पारे. सो इन्वेस्टिगेशन हला इन्वेस्टिगेशन पर एटा जाना पड़े तार इंपैक्ट कोन पड़ला. व्हाट इज द इंपैक्ट ऑफ सत्यम स्कैम. अच्छा सत्यम स्कैम रा ना सुनि छथि ना नहीं, पानामा पेपर्स रा ना सुनि छथि ना नहीं ना जी फर्स्ट टाइम सुनि छथि
सत्यम स्कैम रो ना सुनिछ समस्त सत्यम स्कैम सुनिछ ना ओके पानामा पेपर्स पानामा पेपर्स यस सुनिछ बढ़िया देखो इम्पैक्ट कौन पड़ा सत्यम स्कैम रो इम्पैक्ट कौन आसला ना इम्पैक्ट फर्स्ट कोलैप्स ऑफ द सिस्टम ये सिस्टम देखो ये सिस्टम कंप्लीटली कोलैप्स हो गला स्टॉक वैल्यू आर रिड्यूस हो गला एंड देन इट वाज लेटर ऑन इट वाज एक्वायर्ड बाय टेक महिंद्रा इंडियन आईटी सेक्टर ऊपर मध्ये इम्पैक्ट पड़िला ये रेपुटेशन ऑफ इंडियन आईटी इंडस्ट्री ऊपर इट क्वेश्चन द रेपुटेशन ऑफ इंडियन आईटी इंडस्ट्री इंडियन आईटी इंडस्ट्री ऊपर क्वेश्चन पड़िया कारण कस्टमर बेस कमी गला क्लाइंट एवं इन्वेस्टर दे क्वेश्चन क्रेडिबिलिटी ऑफ इंडियन फार्म दे क्वेश्चन क्रेडिबिलिटी की एक्चुअली होउची यदि एमती देन और whatever we have invested in the company that is in question maybe सेटा न रही पारे in future so there is impact on Indian IT industry also investor माने जो माने investment करथिले investor loss huge loss सत्यम scam पर huge loss and there is a dead requirement need for reform in the corporate governance dead requirement for corporate governance so this incidents led to major reform in corporate governance and auditing practice in India. Then regulator key and regulators like SEBI, Security and Exchange Board of India. So they started using some strict guidelines, strict disclosure norms, strict accountability measures. कौन कहले माने strict accountability measures आनिबे बुझिला. Then Companies Act 2013 it introduced provisions to improve transparency and prevent corporate fraud. Companies Act 2013 amendment ये कौन कहला ना ये कहला कि there should be transparency and we should prevent corporate fraud. ताले सत्यम स्कैम रो हम सिखिले कोन ना व्हाट वी नीड देयर इज अ नीड फॉर स्ट्रांग गवर्नेंस व्हिच गवर्नेंस कॉर्पोरेट गवर्नेंस देयर इज अ स्ट्रांग नीड फॉर कॉर्पोरेट गवर्नेंस and it highlighted need for independent board members then it highlighted there is a need for independent board members robust internal control auditor accountability. It raised questions about the role and integrity of auditors, leading to tight regulation, accountability mechanism. Investor vigilance. It underscored the need for investors to carefully evaluate financial statements. Investor vigilance means investment केतिकी हेची कोटी हेची properly हेची ना नहीं properly हेची ना नहीं investor vigilance ऊपर there is question. तले ए जो एते प्रकार क्राइम हमें देखिले आको को प्रकार क्राइम कहले आर द फर्स्ट पॉइंट आर द क्राइम्स और नॉट जहाँ जहाँ हमें डिस्कस कले दे आर क्राइम्स और नॉट ये सब गुड़ा को हमें क्राइम कहवा कि नहीं बंधु ये सब गुड़ा को हमें क्राइम कहवा कि नहीं ये सब गुड़ा को हमें क्राइम कहवा कि नहीं यस ऑल ऑफ दिस दे आर कॉल्ड एज क्राइम्स व्हिच टाइप ऑफ क्राइम सत्यम रे जहाँ हैला विजय मल्ल्या कंडीशन जहाँ पड़िले दीज आर क्राइम्स और नॉट यस और नो if yes then which type of crime if yes then which type of crime yes crimes which type of crime कौन कहा जो मन को crime these are known as economic crimes these crimes are called as economic crimes clear so economic crime means crimes which are economic in nature crimes which are economic in nature so they are called as financial crimes to earn economic gain objective कौन था objective generally crime रो objective कौन था bloodshed killing murder नहीं bloodshed murder killing और कहा को डराइबा धमकाइबा मारी दवा life threatening now it is objective is not same objective is simply financial gain or economic gain एटी कौन चाहू छे हमें एठी हमें फाइनेंशियल बा इकोनॉमिक गेन चाहू छे आउ किछरा आवश्यकता एठी नहीं हैला
So these are illegal acts committed by an individual or group of people to obtain financial or professional advantage. To obtain financial or professional advantage. So simply what's economic crimes are frauds which are committed for financial gain. These crimes are different from other crimes. They do not directly affect the physical state of the person aggrieved. These economic crimes not only affect the individuals but also affect or damage the economy of the country. But also it damage economy of the country. Then emanakar objective kono? Now objective is economy economy upar impact pokaya. Financial gain is the basic objective. Financial gain is the basic objective. Then it damages economy. It damages economy. ये economy को damage करूँ. ये कौन करता ना only economy को damage करूँ. Now देखो objectives. To assist policymakers in streamlining regulatory and enforcement mechanism. To help banking, insurance, capital market, other related sectors in devising risk management strategy. Impact on national economy. Economic crimes cause significant damage to the general economy of the country, adversely affecting growth, development. आउ कौन इकोनॉमिक इंपैक्ट कौन पड़ुची ना इन्फ्लेशनरी प्रेशर इकोनॉमी ऊपर इन्फ्लेशनरी प्रेशर पड़ुची कि नहीं इन्फ्लेशन अधिक हेले इकोनॉमी ऊपर इन्फ्लेशनरी प्रेशर मध्य पड़ियो देयर विल मोर इन्फ्लेशन एंड इन्फ्लेशन रिलेटेड इश्यूज प्राइस हाइक हे जो अननेसेसरी हैला अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्स नो अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन इट विल लीड टू मोर इनइक्वालिटी इन द सोसाइटी मोर गिनी कोएफिशिएंट आई कैन से कौन कहबी it can lead to more Gini coefficient. ये Gini coefficient बढ़ाई दबो. Gini coefficient कौन था? Inequality create करता है. It will create more inequality. Marginalization of tax base, tax कमी जीवो. जितने भी tax मिल जाता था, tax मिल परिवन. There is marginalization. Reduction in tax. Generation of black money. Market economy में black money generate हो, more black money. What is the difference between black money and illegal money? Black money कौन और illegal money कौन कही परिवे? What is black money and what is illegal money? What is black money and what is illegal money? So एठी illegal money यार source is illegal. It is source is illegal. Here, illegal money. Illegal money, the source is illegal. Maybe crimes like extortion, kidnapping, supari killing, ये सब करके जदि पैसा ड्रग्स ट्रैफिकिंग ये सब कला पर दैट इज इलीगल मनी. The source is illegal. Now black money रे कौन हुई? The source may be legal. The source may be legal. It may be legal, but source may be legal, but it कौन हुई? This is tax is not paid, but tax is not paid. This is untaxed money. What is this? This is untaxed money. मु कहली मु पढ़े की इनकम कली मासको 10 लाख, but tax देली नहीं. Source is legal, पढ़ेवाटा is not illegal activity. That is black money. Yes or no? That is black money. Now एठी देखिला हम illegal money रे source extortion, kidnapping कला, supari killing कला, drugs trafficking कला, arms and ammunition trafficking कला, ये सब कहले कोन? All these are illegal money. I would कहली that is black money. One is black money, another one is illegal money. So ये कुछ इकोनॉमी रे इलीगल मनी सॉरी ब्लैक मनी टा इंक्रीज होची एटी कोन होची ना एटी ब्लैक मनी इंक्रीज होची. These are the impacts. Then creation of parallel economy. Black money create hole automatically parallel economy create हो. So black money this is on tax दो न तावन this is unaccounted money. Government पाखे यार हिसाब नहीं नहीं. This is unaccounted money. Unaccounted money कौन करे ना it creates parallel economy. What is parallel economy? Parallel economy कौन? Unaccounted money means जार हिसाब नहीं गवर्नमेंट पाखे. हिसाब रहिले तो गवर्नमेंट will decide what should be the liquidity.
हाँ कि नहीं हिसाब रहिले गवर्नमेंट डिसाइड करिवो ना लिक्विडिटी केते रहबा दरकार मार्केट रे केते टंका रहइबो केते टंका न रहइबो बुझिउछि सो लिक्विडिटी जना पड़ेनी हमको मार्केट रे केते रहइबो केते टंका रहइबो न रहइबो सेटा गवर्नमेंट डिसाइड करि पारेनी सो पैरेलल इकोनॉमी रे प्रॉब्लम कोन ब्लैक मनी लीड्स टू ब्लैक मनी ताले कौन कहली दिस इज अनटैक्स्ड और अनअकाउंटेड मनी अनटैक्स्ड और unaccounted money and it leads to parallel economy. It leads to parallel economy. Hello? Means monetary policies they will not be effective. Monetary policy kya anand? Monetary policies will not be effective. बुझेला कौन कहले मॉनिटरी पॉलिसी आ इफेक्टिव होनी पैरेलल इकोनॉमी monetary policy kind effective होनी because in monetary policy it is formulated by RBI एटी कौन देखा जाए ना लिक्विडिटी मेंटेन करा जाए लिक्विडिटी मींस अमाउंट ऑफ मनी इन द इकोनॉमी लिक्विडिटी देखा जाए अमाउंट ऑफ मनी इन द इकोनॉमी बुझेला कौन देखो लिक्विडिटी मींस अमाउंट ऑफ मनी इन द इकोनॉमी तो आरबीआई को जणा ही नहीं मार्केट रे केते मनी अछि कौन कहले तो आरबीआई को जणा ही नहीं मार्केट रे केते मनी अछि तो लिक्विडिटी ऊपर इंपैक्ट पकेबो कि नहीं इट विल हैव इंपैक्ट ऑन द लिक्विडिटी और नॉट yes yes it will have impact on the liquidity hela yela another important point parallel economy now developmental काम होई परिबो कि no developmental काम होई परिबो parallel economy create लानी so there will be no developmental work development socio economic development होई परिबो नाही parallel economy once created now RBI ର monetary policy it will be failure monetary policy it will be failure simply it will be failure monetary policy failure हो गले कौन हम monetary policy जब failure हो जाए ताले socio economic development हो परिबो नाही then automatically it will lead to corruption so development न हेले development न होवा that will also lead to corruption illicit business like start हो illegal business ता कोच illicit business ता कोच illicit by illegal business that will be started जो इकोनॉमिक क्राइम्स हम देखु इट कैन बी डिवाइडेड इनटू थ्री टाइप्स ट्रेडिशनल इकोनॉमिक क्राइम्स लाइक करप्शन स्मगलिंग इमर्जिंग क्राइम्स लाइक क्रेडिट कार्ड फ्रॉड साइबर क्राइम्स देखिए जो सब कॉल आसुनी हमको कॉल आसथियो क्रेडिट कार्ड फ्रॉड करिया पे आपन नंबर दियंतु ई दियंतु सी दियंतु क्रेडिट कार्ड फ्रॉड एंड साइबर क्राइम्स then crimes through which proceeds of transnational organized crime that transmitted abroad like money laundering money laundering रे कोन ना money is sent to abroad here money is sent to abroad corruption what is corruption I will discuss one by one jo what is corruption what do you mean by corruption कोन पूरा आर क्लास में भी एथिक्स से तोड़ पढ़े ethics class पढ़ेला वाला I will discuss about corruption what is corruption corruption is simply the dishonest or fraudulent conduct by those who are in power getting something which you are not liable to getting something which you are not liable to get so corruption is dishonest fraudulent practice this is the fraudulent dishonest practice so it is done to earn money generally it is done by fraudster who may work in a group who may be alone to carry out such activity so the objective of such activity may be to gain money which is illegitimate or by unlawful benefit unlawful advantages unlawful benefit by unlawful advantages that is corruption now what is smuggling smuggling is illegal movement of goods into or outside the country
Smuggling is illegal. What is smuggling? Smuggling is illegal movement of goods. What is smuggling? Smuggling रे कौन लोग smuggling is illegal movement of goods from one place to another place. So tax evasion कौन? What is tax evasion? Tax not the one. It is illegal activity in which person or entity deliberately avoids paying a true tax liability. Yeah. Tax evasion, this is an illegal activity in which person or entity deliberately avoids paying a true tax liability. That's cyber economic crimes. Cyber crimes कौन? This is known as computer crimes. Use of computer is there. Use of computer is there. Cyber stalking, cyber bullying, online harassment, hacking, ये सब. Cyber economic terrorism ही पारे, cyber economic extortion ही पारे, warfare ही पारे, espionage on security breach ही पारे. Credit card fraud, unauthorized access, use of another person's credit card. This दिन तले मत ଗୋଟେ message आसला कि Flipkart to purchase from Flipkart of 8,900 something rupees. This is the OTP. No, I didn't do that purchase. So purchase ମୁଁ କରିନି. None of my relatives did. Now code ଆସିଲା ସେ message. ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? So credit card fraud, unauthorized access. ଏଟା ଏହା पर ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି. Now what is money laundering? Money laundering रे कौन हुए? एटी कौन हुए? एटी money, the source of money is unknown. The mostly the source of income is illegal. Source is illegal. है huge heavy funds illegally gained money. এবং illegally gained money टाको आमे कौन करछे? We are trying to make it a legitimate one. Foreign country पठाउछे, पुनी foreign नु आणुछे as a legitimate. We are entering it into the Indian economy. So fraud कहली already, deliberate deception for personal financial gain. Example, bank fraud, insurance fraud. Money laundering, concealing origins of illegally obtained money to make it appear legitimate. Mechanism quantity, basically it is placement, layering and integration. These are the stages. Placement, layering and integration stage. Then tax evasion. Tax evasion, illegal methods of avoiding tax obligations such as under-reporting income, inflating deduction. Corruption, abuse of power for personal or organizational gain. Bribery, ये सब हम देख लेंगे ना, corruption. Identity theft or cyber crime. So use of stolen identities. Stolen identity means मु कहबी कि let's say your देखियो बड़े बड़े फोन आसे. Okay, same done with me from Mintra, exactly. बड़े बड़े देखियो फोन आसीबो, से कहबो कि मु एसबीआई रु होची, आपनकर क्रेडिट कार्ड बा डेबिट कार्ड बंद हेचो, आपनकर नंबर दियंतु नचेत से ओटीपी जीवो दियंतु. So all those things. मु कहली मोर एसबीआई कार्ड ही नहीं, एसबीआई मोर अकाउंट ही नहीं. Where are you calling from? I am calling from Mumbai, head office Mumbai. Now head office to Mumbai bank ro समस्त को जाना. Now they misuse this term. So stolen identity to access financial system or to commit fraud. Phishing scams. कौन देखिए अपने phishing scams, ransomwares attack, unauthorized access to account. कौन देखिए बोलते unauthorized access to accounts. ये वाला identity theft and cyber crime. Then is counterfeiting. बुझिला identity theft वाला उडला counterfeiting. Counterfeiting रे कौन होजिला illegal reproduction of currency, goods, documents. Example, fake currency. What is the example? Example is fake currency. है Ponzi, pyramid schemes, Ponzi scheme, investment scams where returns are paid to earlier investors. So नुआ investor पाखुर पैसा आनिबे, पुराना investor को पैसा दे देबे. नुआ investor को पैसा आनी पुराना investor को पैसा देबे. ता कहला Ponzi वा pyramid schemes. Insider trading, एठी कोन हुए? मन कर आपन गोटे ऑर्गेनाइजेशन रे काम करछन, आपन को इनसाइड इंफॉर्मेशन जहा से सब गुडा को बाहर लोक को दे देबे. स्पेशली एटा केते बेल हुए जो माने अनने शेयर प्राइस गुडा को जो माने को जाना थाए, शेयर रो प्राइस जो माने को जाना थाए, हैला तले कोन हो देखुन इनसाइडर ट्रेडिंग, इनसाइड इंफॉर्मेशन डा का प्रोवाइड कर.
जो इकोनॉमिक क्राइम मान डिस्कस कले व्हाट आर द इंपैक्ट इकोनॉमिक क्राइम मान इंपैक्ट कौन मत कौन व्हाट आर द इंपैक्ट ऑफ इकोनॉमिक क्राइम्स कौन इंपैक्ट पड़ो ना इकोनॉमिक इंपैक्ट पड़ो लॉस ऑफ रेवेन्यू रेवेन्यू लॉस करियो आपण मार्केट इनस्टेबिलिटी देखियो मिलियो मार्केट आउ स्टेबल रहइबो ना फ्रॉड इनसाइडर ट्रेडिंग ये सब बोले कौन इट विल डिसरप्ट फाइनेंशियल मार्केट सोशल इंपैक्ट इरोजन ऑफ ट्रस्ट आपण ट्रस्ट कमी जो एठी लोकन इनइक्वालिटी क्रिएट हो जेमति विजय माल्या कंडीशन हम देखिले इनइक्वालिटी क्रिएट हो पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंस कौन मिलो ना वीकेंड गवर्नेंस सो करप्शन अंडरमाइन्स ट्रस्ट इन इंस्टीट्यूशन करप्शन हेले ट्रस्ट कमी जीवो हां कि नहीं इंक्रीज करप्शन इट विल रिड्यूस ट्रस्ट लेवल डिस्टेबिलाइजेशन ऑर्गेनाइज्ड फाइनेंशियल क्राइम्स इट दे कैन फंड टेररिज्म एमाने कोन करि पारन टेररिज्म को माने फंडिंग करि पारन टेक्नोलॉजिकल वल्नरेबिलिटी क्रिएट हो पारे डिजिटल सिस्टम रे क्रिमिनल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो पारे नो ये चारटा पॉइंट बुझेला व्हाट आर द इंपैक्ट ऑफ इकोनॉमिक क्राइम्स ये जो इकोनॉमिक क्राइम मानक ऊपर हम डिस्कस करछे एमानकर इंपैक्ट कोन हो पारे नाउ व्हाट आर द प्रिवेंशन एंड लीगल फ्रेमवर्क आको प्रिवेंट हम केमति करि परियो हाउ कैन यू प्रिवेंट इट एंड व्हाट इज द लीगल फ्रेमवर्क कौन कर परियो now there are certain organization international cooperation is required organizations like Interpol financial action task force united nations office on drugs and crime so they facilitate cross border cooperation now india रे crime करिवो नेपाल पळेव यूएसए पळे विजय माल्या कंडीशन कोन इंडिया रे क्राइम करी जाई फॉरेन तो फॉरेन यूके रो आनिबो केमती एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी जो कंट्री मानक सहित साइन हेची एक्स्ट्राडिशन मींस क्रिमिनल जेतो आ गोटे कंट्री जाउ ताको आउथरे एक्स्ट्राडिट करके इंडिया को आनिबा दैट इज एक्स्ट्राडिशन दैट इज डिफिकल्ट हां एक्स्ट्राडिशन करिबा इज डिफिकल्ट एटा केते बेले करिवो ना ओनली इफ यू हैव एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी विथ दैट कंट्री नो कोऑपरेशन इज रिक्वायर्ड अदर अन्य मानकर कोऑपरेशन दरकार कि दरकार नहीं मते कोन एब्सोल्युटली इट इज रिक्वायर्ड cooperation of others required or not yes it is required then anti money laundering laws anti money laundering laws in india we have pmla prevention of money laundering act who enforces it ये act को की enforce करे इंडिया रे कहि परबे कि मते which organization enforces pmla prevention of money laundering act के so different laws are required strict laws stringent laws are required like pmla USA there is a Patriot Act. In USA there is a Patriot Act like India's PMLA, Prevention of Money Laundering. बुझेला मो कथा ना बुझी पड़ना कौन PMLA को किए एनफोर्स करूछ Any question? Any question? Quick. No question. Fine. A PMLA is implemented by not finance sector. This is by enforcement directorate. Please write it. ED. So ED कौन है? The enforcement directorate. Enforcement directorate. प्रवर्तन निर्देशालय. है ED. Then corporate governance, strong compliance mechanism, ethical business practice. It is required or not? Ethical business, proper corporate governance, ethical business practice is required. Technological measures, it enhance cyber security. देखो, blockchain technology, cyber security, ये सब काम को protect करिया transparency दरकार, AI based fraud को रोकिया दरकार. ना सबुठ important कौन है जानी चाहिए ये type of crime बा criminal activity रे. सबुठ important होची public awareness. कौन कहली व्हाट सबुठ इंपोर्टेंट कौन सबुठ इंपोर्टेंट है पब्लिक अवेयरनेस यदि हम पाखे पब्लिक अवेयरनेस नहीं सो वी शुड हैव एजुकेशन अबाउट फिशिंग स्कैम्स आइडेंटिटी प्रोटेक्शन रिकॉग्नाइजिंग फ्रॉडुलेंट स्कीम्स ये सब हमको नॉलेज दरकार
दिस क्लियर बुझीला कौन करि परिबा और कौन न करि परिबा एठी ना बुझीलानी क्विक एवरीवन क्लियर एवरीवन क्लियर सिक्योरिटी थ्रेट बुझी होउची इजी लागुची कि नहीं मते कोन सिक्योरिटी थ्रेट्स बुझी होउची इजी लागुची सिक्योरिटी थ्रेट्स बुझीला तले हेई परबे या पर क्वेश्चन किछ आसले लिखि परिबे ना मनी लॉन्ड्रिंग देयर आर डिफरेंट फेजेस प्लेसमेंट लेयरिंग एंड इंटीग्रेशन प्लेसमेंट रे फर्स्ट इलीगली अर्न मनी टाको कोन हो कलेक्ट करा जिवो देन लेयरिंग हो लेयरिंग मींस बाहर गला बाहर जिया पर ताको इंडिया को पठे छोट छोट पार्ट रे स्मॉल ट्रांजैक्शन जेमति इट विल नॉट बी डाउटफुल देन इंटीग्रेशन हो जिवो सेटा इकोनॉमी जना पड़े दीज आर द थ्री फेजेस प्लेसमेंट लेयरिंग एंड इंटीग्रेशन बुझियला बुझियला कि नहीं मते कोन प्रिवेंशन इकोनॉमिक क्राइम रो प्रिवेंशन केमति हे सो सिक्योरिटी थ्रेट्स पर हम एमती आउरी अनेक क्लास आनिबा आज पई एतिकी आउ क्लास मानिबी आगो आसंता काली गोटे बहुत बढ़िया टॉपिक पढेबी सिक्योरिटी फोर्सेस एंड देयर मैंडेट डिफरेंट डिफरेंट सिक्योरिटी फोर्स कोन अछंती इंडिया रे एग्जिस्ट करचंती एवं समानकर मैंडेट समानकर फंक्शन कोन सिक्योरिटी फोर्स मानकर फंक्शन कोन बुझिना डिफरेंट फंक्शंस ऑफ सिक्योरिटी फोर्स नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करिया यदि कार किछ क्वेश्चन अछि पचारियो ताले पचारो ताले आजिरो क्लास रो कोन जानिलो कोन सिखिलो इकोनॉमिक क्राइम्स कोन कोन पढिले हमें आजिरो क्लास इकोनॉमिक क्राइम्स हैला टाइप्स impact solution types impact and solution ठीक अछि a question means lekha what do you mean by economic crime what do you mean by economic crime discuss its types and impact on the economy hala economic crimes are to be treated as economic crimes are to be treated as most serious crimes most serious against Indian economy explain हैला explain हो लिख परियो लिख परियो दीटा क्वेश्चन लेख देखिए कौन हो आज ये आ देखिए नेक्स्ट क्लास काली आउ किछि इंपोर्टेंट टॉपिक आनिक आसीबे डिस्कस करिया जदि किछि पचारिबे डाउट पचारो
ठीक है, that's all for this session. Thank you. Good night.